गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मना अवतारं शृणु विभो सुनत्कर्णटावयं यदा हि कालिका देवी पार्वती हिमवत्सुता तिपेतपासु विमलं वनं गत्वा शिवाप्तये तदा शिवः प्रसन्नो भूतस्यासुतपसो मुने तद्वृत्त सुपरीक्षार्थ वरं दातुमुदाययौ स्वरूपं दर्शयामास तस्य सुप्रीतमानसा वरं ब्रूहीति चोवाच तां शिवा शङ्करो मुने तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं दृष्ट्वा तद्रूपमुत्तमं सुजर्ष शिवातीव प्राहतं सुप्रणम्य सा पार्वती उवाच यदि प्रसन्नो देवेश महादेव वरो यदि पतिभर्व ममेशान कृपां कुरु ममोपरि पितुर्गृहे मया सम्यक् गम्यते त्वदनुज्ञया गन्तव्यं भवता नाथ मतिपतु पार्षता प्रभो यचस्व मा ततो भिक्षु ख्यापयंक्ष यशाशुभं पितुर्मे सफलं सर्वं कुरु प्रीत्या गृहाशमं ततो यथोक्त विधिना कर्तुमर्हसि भो प्रभो विवाहं त्वं महेशानं देवानां कार्यसिद्धये कामं मे पूरय विभो निर्विकारो भवान् सदा भक्तवत्सलानामाहि तव भक्ता समयं सदा। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्ता स तया शम्भुर्महेशो भक्तवत्सला तथा सिद्वती वचा रोचयान्त हीर्तस्वगिरिं ययो पार्वत्यपि तथा प्रीत्या स्वसखीभ्यां समन्विता जगाम स्वपितुर्गेहं रूपं कृत्वा तु सार्थकं पार्वत्यागमनं श्रुत्वा मेनया स हिमाचला परिवारयुतो द्रष्टुं स्वसुतां ताययो मुदा दृष्ट्वा तासु प्रसन्या सा मानयामास तुर्गृहं कारयामास तु प्रीत्या महानन्दो महोत्वस्वं धनं तदो द्विजादिभ्यो मेनागिरिवरस्तथा मङ्गलकारयामास स्वेधवनिमादरा तथा स्वकन्यया सार्धुमुवास परागणे मुदा मिना च हिमावाञ्छल सनातुं गङ्गा जगाम सा एतस्मिन्नन्तरे शम्भुः सुलीलो भक्तवत्सला सुनर्तकर्णटो भूत्वा मेनकासनिधिं ययौ शृङ्गवामे करे धृत्वा दक्षिणे डमरुं तथा पृष्ठे कण्ठा रक्त्वा सा नृत्यगान विशारदा ततस्तु नटरूपोऽसौ मेनकाप्राङ्गणे मुदा चक्रे स नित्यं विविधं गानाचातिमनोहरम् शिगञ्च डमरुं तत्र वादयामासुधवनिमा महोतिं विविधा प्रीत्या स चकार मनोहरां त्वं द्रष्टुं नागरा सर्वे पुरुक्षाक्ष स्त्रियस्तथा आजगमु सहसा तत्र बालावृता अपि ध्रुवं श्रुत्वा सुगीतं तं दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरं सहसा मुमुहुः सर्वे मेनापि च तदा मुने ततो मेनाशु रत्नानि स्वर्णपात्रस्थितानि च तस्मै दातुं ययो प्रीत्या तदूति प्रीतमानसा तानि न स्वीचकारासो भिक्षां काण्डशे शिवां चातां पुनः सुनृत्यं गानं च कौतुकात् कर्तुमुद्यत मीनात्वचनं श्रुत्वा चुकोपाति सुविस्मिता भिक्षुकं भर्त्सयामास बहिष्कर्तुमीयेष सा एतस्मिन्नन्तरे तत्र गङ्गातो गिरिराञ्चचो ददर्श पुरतो भिक्षुं प्राङ्गणस्थं नराकृतं श्रुत्वा मेनामुखादवृत्तं तत्सर्वं शुचुकोपसा आज्ञां चकारानुचरान् बहिः कर्तु च भिक्षुकं महागिनीमिव दुस्पर्श प्रज्वलन्तं सुतेजसं न शशाक बहिः कर्तुं कोऽपि तं मुनिसतं तथा स भिक्षुकस्तात् नानालीला विशारदा दर्शयामास शैलाय स्वभ्राः प्रभृतां
प्रभावमनन्तकं शैलो ददर्शं तं तत्र विष्णुरूपधरं धृतं ततो ब्रह्मा स्वरूपं च सूर्यरूपं तताक्षणात् ततो दर्शं तं तात रुद्ररूपं महादुतं पार्वतीसहितं रम्यं विहसन्तं सुतेजसम् इवं स बहुरूपाणि तस्य तत्र ददर्श स सुविस्मितो बभूवाशु परमानन्दः सम्प्लुतथासो भिक्षुवर्यो हि तस्मात् स्याक्षसूतिकृत् भिक्षां ययाचे दुर्गा तामनान्यजग्राहकचन् ततक्षान्तर्दधे भिक्षु स्वरूप परमेश्वर स्वालयं स जगामाशु दुर्गावाक्यप्रणोदिता तदा बभूव सुज्ञानं मेना शैले शर्योरपि आवां शिवो वच्यत्वा गतवान् स्वालयं विभु अस्मि देया स्वकन्येयं पार्वती सुतपस्विनी एवं विचार्य च तयो शिवभक्तिरुत्परा अतो रुद्रो महोतिक्ष कृत्वा भक्तमुदावहं विवाहं कृतवान् प्रीत्या पार्वत्या सविधानता इति प्रोक्तस्तु ते तात सुनत्कण्ठावह्य शिवावतारो हि मया शिववाक्या परपूरका इदमाख्यानमनघं परमं व्याहृतं मया य एतच्छृणुयात्प्रीत्या स सुखी गतिमाप्नुयात् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्रसहितायां सुनत्कण्ठा शिवावतारवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः।